all of them are kind of identical, isn't it? There is very small difference in frequency of first wave, second wave and third wave, and the resultant wave also has more or less same kind of frequency. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेव मोशन के चैप्टर से एक क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन। अ डिटेक्टर इज एबल टू डिटेक्ट ए साउंड if the intensity is greater than I naught. I naught is some number and detector is able to detect sound only when intensity is greater than I naught. Our human ear is also a kind of detector and it can detect any sound if intensity at the eardrum is greater than 10 to the power minus 6 watt per square meter. So I naught is a number and the detector can register a sound only if intensity is greater than I naught. A tuning fork of frequency 400 Hz when sounded at a distance of 1 meter from the detector produces a sound having intensity I naught at the detector. एक ट्यूनिंग फोर्क है जो डिटेक्टर से 1 मीटर दूर रखा गया है, उसको जब बजाते हैं तो डिटेक्टर की लोकेशन पे उसने जो वेव प्रोड्यूस किया है उसकी इंटेंसिटी I naught है. दैट मीन्स दिस साउंड कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर. नाउ two other tuning forks are placed at a distance of 1 meter again from the detector. Each of these forks produce sound of intensity I naught at the detector. तो टोटल मिला के 3 ट्यूनिंग फोर्क हैं, तीनों डिटेक्टर से 1-1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं. तीनों को बजाने से, इंडिविजुअली किसी एक को बजाने से डिटेक्टर की लोकेशन पे इंटेंसिटी I naught होती है. लेकिन इन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसीज में फ़र्क है. पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज थी और ये जो दो अलग से ट्यूनिंग फोर्क रखे गए हैं, द फोर्क्स हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 402 एंड 404 हर्ट्ज. व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द डिटेक्टर? आई एम गेटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, यू कैन कैप्चर द क्वेश्चन एंड गिव इट अ ट्राई. स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ये बीट्स के फेनोमेना पे बेस्ड है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बीट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो दो वेव के सुपरपोजिशन से बनने वाले बीट्स की बात होती है. यहाँ पर हम किसी 3 तरह के सोर्स से पैदा होने वाले वेव्स के सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं. तो जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी लोकेशन डिटेक्टर से 1 मीटर दूर है. हम डिटेक्टर को ही ऑरिजिन मान सकते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी कैन कंसिडर दैट डिटेक्टर इज लोकेटेड एट ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स and therefore the first wave that is reaching the detector from first tuning fork, this tuning fork 1, and the wave that it produces reaches the detector. This is detector which is at a distance of 1 meter, and let us assume that detector is at the origin and therefore the disturbance that this tuning fork produces here can be written as y is a sine omega t. I am assuming, जैसा आप जनरल वेव इक्वेशन लिखते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स, so x is 0. I am taking this point as origin, right? In case of sound wave, the better way of writing will be to express this as a pressure wave. The y is nothing but change in pressure produced due to that particular tuning fork at any particular location, and a is the pressure amplitude. Okay, I hope symbols doesn't matter, you all understand that this is the maximum change in pressure that is caused by this wave at this particular location. And because we are taking this as origin, so a sine omega t minus kx, x has been kept to be 0. So this is the simple equation. Now the frequency of this wave is 400 hertz. I hope all of you know that omega is 2 pi f. Therefore this equation can be written as a times sine of 2 pi f. F is 400 into t, right? So this is the equation of first wave. Similarly, there is another tuning fork, fork number 2, that is also at a distance of 1 meter, and disturbance produced due to this wave, second wave, at this location can be expressed as a sine 2 pi 402
into t. This is 2 pi. This is 2 pi into 402 into t, 2 pi ft. Similarly, for third tuning fork, you can show it here. It will be a sine 2 pi 404 t. So, what we are exactly supposed to find is the superposition of these three waves. So, when these three waves arrive at this point simultaneously, what will be the resultant amplitude of the disturbance? It is given by principle of superposition, and the principle of superposition says that resultant disturbance at this particular location is sum of disturbances due to individual waves, which means resultant disturbance at this particular location will be y1 plus y2 plus y3, as simple as that. So, we will do a couple of lines of mathematics and we will try to comprehend what exactly the mathematics is trying to tell us. Now, it is very easy to see, students. I am going to add these two first, right? I am going to apply the formula of trigonometric formula of sin c plus sin d, which is 2 times of sin c plus d by 2 cos of c minus d by 2 or d minus c by 2, whatever. So, if I add these two first, then it will become 2a. I am adding y1 and y3 first. So, it will become 2a sine of 2 pi 400 plus 404 by 2t into cos of 2 pi 400 minus 404 by 2t. Am I right? Sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. And then there is third term y2, which I am putting it here. It is a sine 2 pi 402 t. Now, it can be easily seen that this term is sine 2 pi 402 t. This thing is nothing but 402. So, in this first term and second term, sine 2 pi 402 t is common. So, I am taking it as common along with a. So, it becomes a sine 2 pi 402 t. Rather, I will not take a here. I will write it in a different place. Okay. So, I have just taken this sine thing as common, and then of course, a is common. I am writing it here, and then the quantity that we are left with inside our bracket is, here it is 1 and here it is 2 times of cos of 2 pi, and this becomes 2t. Can all of you see this? Simple mathematics. Okay. So, what does this equation tell us? The physics says that when these three waves overlap, the resultant disturbance at the position of the detector is given by this equation. But does this equation make any sense to all of us? What sense does it actually make? Let us try to comprehend it. It is easy to comprehend if we just assume that this whole quantity is a. Let me write it as a. So, now this equation simply can be written as a sine 2 pi 402 t, right? Now, look at the three given waves and the resultant wave. Just have a look at. This is the first wave, a sine 2 pi 400 t. This is the second wave. The only difference being here, this is the second wave, this is the third wave, 400, 402, 404. And the resultant that we obtain is a very similar kind of wave. I mean, the resultant is again a wave having frequency of 402 hertz.
So these three waves overlap at the location of the detector, and the disturbance, you can call it amplitude of oscillation of particle, or you can call it amplitude of oscillation of pressure, whatever you like to call, you can call it. So this is amplitude of oscillation of pressure or amplitude of movement of a particle at the location of detector, which and its frequency is 402 हर्ट्ज. अगर सिर्फ पहला वेव होता तो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल चलता, दूसरा होता तो 402 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से चलता, तीसरा होने से 404 हर्ट्ज. तीनों वेव अगर हैं तो एट द लोकेशन ऑफ द डिटेक्टर द डिस्टर्बेंस हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 402 हर्ट्ज. So all of them are kind of identical, isn't it? There is very small difference in frequency of first wave, second wave and third wave, and the resultant wave also has more or less same kind of frequency. In fact, it is the frequency in this example is same as the frequency of the second wave. So तीनों वेव ने मिलके अपने ही जैसा एक रिजल्टेंट बना दिया, ऐसा बोल सकते हैं आप. बट द पॉइंट इज कि ये जो तीनों वेव हैं इनके एम्पलीट्यूड फिक्स थे, पर ये जो रिजल्टेंट है इसका एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट है. This amplitude term is time dependent. It is changing with time. Some of you may think that why don't we take this as amplitude and this as the oscillating term? Well, that may not be very correct, because the three superimposing waves have frequency of 400, 402 and 404 hertz. Now, this particular term has a frequency of 402 hertz, which is very close to, rather it is equal to frequency of one of the waves. So मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जो तीन वेव मिले उनके मिलने से उन्हीं के जैसा एक वेव पैदा हुआ है. लेकिन ये जो टर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. देखिए कॉस और साइन, कोसाइन और साइन वाले फंक्शन में 2 पाई टी को छोड़ के ये जो नंबर है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी. सो ये जो कुछ भी इसको आप कहना चाहें कहें, पर इस टर्म की फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है, मतलब टाइम पीरियड बड़ा है, ये बहुत धीरे धीरे बदल रहा है. ये जो टर्म है ये तो बहुत रैपिडली बदल रहा है. इसकी फ्रीक्वेंसी 402 हर्ट्ज है, एक सेकंड में 402 साइकिल. लेकिन ये जो टर्म है इसकी एक सेकंड में सिर्फ 2 साइकिल होती है. तो ये ग्रेजुअली चेंजिंग टर्म है, राइट? इस ग्रेजुअली चेंजिंग टर्म को हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, और जो बाकी बच गया उसको वैसा ही साइनोसॉइडल वेव है जैसा कि 3 कंपोनेंट वेव्स दिए हुए हैं. तो भाई ये जो रिजल्टेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड, लेट अस फोकस ऑन द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज 8 टाइम्स 1 + 2 cos 2 pi 2t. So the amplitude is 8 times 2a, I am writing it like this, 8 times 2a cos of 2 pi 2t, right? Now, how is the amplitude changing with time? If I ask you to draw a graph, can you do it? Pause the video and try to do it on your own. Draw a graph showing variation of amplitude of the resultant disturbance with time. Amplitude on y-axis, time on x-axis. Draw a graph. Well, here I am doing it for you. ऐसा सोचिए कि अगर ये a नहीं होता, जस्ट ये होता, तो क्या आप ग्राफ बना पाते? कोसाइन का ग्राफ जिसका एम्पलीट्यूड है 2a cos 2 pi 2t, मतलब फ्रीक्वेंसी 2. तो अगर ये टर्म नहीं होता, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस टर्म, जस्ट थिंक दैट दिस इज व्हाट वी वांट टू प्लॉट. इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक नॉर्मल कोसाइन का ग्राफ बनेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी. इसका मतलब ये एक साइकिल हुआ, एक साइकिल, या यहां से काउंट करेंगे तो ये एक साइकिल और ये 2 साइकिल, यहां से यहां तक. जस्ट ए मिनट, ये एक साइकिल और ये 2 साइकिल, ये 2 साइकिल पूरा करने में 1 सेकंड लगता है. टाइम 0 से 1 सेकंड होते होते ये कोसाइन का ग्राफ 2 साइकिल पूरे कर लेता है. दिस व्हाट इट मीन्स. अब अगर ये एम्पलीट्यूड 2a है तो नेचुरली ये 2a होगा. अब अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसमें a ऐड कर दीजिए. इसमें a ऐड करने का मतलब क्या हुआ? आप सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि जहां इसकी वैल्यू जहां पे 0 है
ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू ए के बराबर होगी। तो इनफैक्ट बहुत सिंपल हम यहीं पे कर सकते हैं कि ये जो टाइम एक्सिस है इसको नीचे खिसका दे। अगर हम इस टाइम एक्सिस को अगर हम सिंपली नीचे शिफ्ट कर दें बाय डिस्टेंस ए, यहां पे ले आए, ये ओरिजिन यहां की बजाय यहां कर दें, तो यही हमारा ग्राफ हो गया। अगर मैं इसको फिर से अलग से बना दूं, मुझे लगता है इतनी मैथमेटिक्स आप सभी को आती है, मैं बेकार में कोशिश कर रहा हूं। इसमें ए को अगर जोड़ेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, ओरिजिन हो गया, ए हो गया, ये चीज 3a हो जाएगी। तो ये ग्राफ हमें ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा, ये 3a और ये a, राइट। बच्चों आप सभी जानते हो कि किसी भी वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो रिजल्टेंट है उसकी इंटेंसिटी का ग्राफ अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करूं, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लॉट करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये जो निगेटिव में दिख रहा है ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। और ए नॉट एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी आई नॉट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा कि जब एक इंडिविजुअल ट्यूनिंग फोर्क को बजाते हैं तो डिटेक्टर पे इंटेंसिटी आई नॉट है, तो ए एम्पलीट्यूड के लिए इंटेंसिटी आई नॉट है। सो आई नॉट इज सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर एंड दिस इंटेंसिटी इज 3a स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 3a स्क्वायर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ आई नॉट, सो 9 आई नॉट। तो तीनों ट्यूनिंग फोर्क बजने से डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा वो क्या होगा? 9 आई नॉट की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी उसने डिटेक्ट की, इंटेंसिटी घटती घटती 0 हुई, फिर आई नॉट हुई, फिर 0 हुई, फिर 9 आई नॉट हुई, सो ऑन सो फोर्थ। और क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटेक्टर साउंड तभी डिटेक्ट करता है जब इंटेंसिटी आई नॉट से बड़ी हो। जब इंटेंसिटी आई नॉट से बड़ी हो तो इस डिटेक्टर को ये मैक्सिमा सुनाई देगा, ये मैक्सिमा वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा क्योंकि इंटेंसिटी तो आई नॉट ही है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस यहां से लेके यहां तक उसको लगेगा कोई साउंड ही नहीं है। यहां अभी आवाज है, आवाज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और ये आवाज खत्म हो गई थोड़ी देर के लिए, और फिर यहां से आवाज बढ़ने लगी, ऐसा डिटेक्टर को सुनाई देगा। तो 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ मैक्सिमास वो रजिस्टर करेगा उसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे देख लीजिए, इसको एक साइकिल मान लीजिए इंटेंसिटी का, ये एक कंप्लीट साइकिल है इंटेंसिटी का, फिर से ग्राफ सिमिलरली रिपीट हो रहा है, इजंट इट? और इंटेंसिटी का एक साइकिल, यहां गौर कीजिएगा, जैसे ये एम्पलीट्यूड का एक साइकिल पूरा हुआ, एम्पलीट्यूड का एक साइकिल, इंटेंसिटी का एक साइकिल, ये एम्पलीट्यूड का दूसरा साइकिल, तो ये इंटेंसिटी का दूसरा साइकिल, इजंट इट? तो अब आप आसानी से समझ सकते हो कि उसको 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमा सुनाई दिया। आपने अभी ग्राफ यहाँ पे जो बनाया था एम्पलीट्यूड के लिए, ये अगर टाइम 0 है तो ये टाइम 0.5 सेकंड है, और ये टाइम 1 सेकंड है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी। इसको स्क्वायर करने के बाद भी अगर आप गौर से देखोगे, इस सिचुएशन को गौर से देखो, तो यहाँ उसको मैक्सिमा सुनाई देगा, यहाँ मिनिमा है पर ठीक है उसको 0 ही सुनाई देगा इसको स्क्वायर करने के बाद भी, बिकॉज इंटेंसिटी इज आई नॉट। और यहाँ पे फिर से एक मैक्सिमा उसको सुनाई देगा, और फिर से यहाँ पे एक मैक्सिमा सुनाई देगा। जब ये ऐसा होगा, दैट मीन्स 1 सेकंड में अगर ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ ये वाला पीक कितनी बार बना रहा है? 2 बार बना रहा है, 1 साइकिल। अगर यहाँ 0 सेकंड माने तो ये 1 साइकिल और ये 2 साइकिल, 2 मैक्सिमा, तो यहाँ पे भी आपको 2 ही मैक्सिमा सुनाई देंगे। तो इस केस में जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज हो जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझाया गया है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, पर थोड़ा लाइक कर दो, कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर लो, मुझे भी तो अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं अगले दिन किसी और क्वेश्चन के साथ।